Now, talking about wealth redistribution and wealth tax, today Sam Pitroda's remarks has put the Congress in a bit of a dock again. Congress Overseas Chairperson has given fresh ammunition to the BJP, this time by lauding US's inheritance policy. Praising US policy, Pitroda suggested that 55% of a person's wealth should be taken by the government after his or her death and redistributed to the people. The BJP came down heavily on Congress, slamming wealth tax push vow by Sam Pitroda. The Saffron Party called it organized loot and legalized plunder by the Congress. The Congress, though, distanced itself, in fact, from Pitroda's statement, calling it his personal view. The Grand Old Party said that his words were being twisted only to divert attention. Pitroda also has backtracked from his remark, calling it his own views, and said that this isn't any party's views, this is not Congress's policy. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. I think what Mr. Sam Pitroda is trying to say is that the wealth of the distribution of wealth should be equitable, and the current regime is more concerned about concentrating wealth in a couple of industrialists' hands, whereas we are concerned about distributing wealth to the marginalized people of the society, irrespective of their caste or community. The idea is to empower people at the bottom of the pyramid to ensure that we have a equitable society, both socially and economically. So the BJP is just trying to make this a poll issue by bringing it to about one community. सैम पित्रोदा का जो बयान है, वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है, मुझे लगता है। ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगताएगी। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। ये कितना भी कुछ बोल लें, पर जब तक मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति का ना ही प्रॉपर्टी काउंट होगी, ना ही सोना काउंट होगा, ना ही उनके जितने एसेट है उनकी जिंदगी में उन्होंने खून पसीने से कमाए, एक को भी धक्का हमारे मोदी जी नहीं लगने देंगे।